વલસાડ રેલવે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ નંબર 2 અને 3 ઉપર ટિકિટ ચેક કરતો નકલી ટીસી પકડાયો। તારીખ 2 ઓગસ્ટ શુક્રવારના રોજ 10 કલાકે નોંધાયેલી ફરિયાદની આજરોજ શનિવારના મળતી માહિતી મુજબ તમે નકલી પોલીસ, નકલી ડોક્ટર તો જોયા જ હશે, તેવી જ રીતે વલસાડ રેલવે પોલીસની ટીમે નકલી ટીસી ઝડપી પાડ્યો છે। વલસાડ રેલવે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ નંબર 2-3 ઉપર એક મુસાફર મુસાફરી કરી રહ્યો હતો, જે દરમિયાન તેઓ પ્લેટફોર્મ ઉપરથી પસાર થતા નકલી ટીસીએ મુસાફર પાસે ટિકિટ માંગી હતી। જો કે મુસાફરને શંકા જતા તેઓએ રેલવે પોલીસ મથકે આવી ઘટનાની જાણ કરતા પોલીસે નકલી ટીસીને ઝડપી પાડ્યો હતો અને નકલી ટીસી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી फरियाद दाखिल करी હતી। बोलिए क्या किया आपने? आपका नाम क्या है? सर समाधान सामुद्र। कहाँ से हो? नंदुरबार से। वलसाड़ क्या करने आए थे? सर वलसाड़ में यहाँ पे वापी में आया था इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन किस चीज़ की इंटरव्यू देने आए थे? सर कंपनी में। कौन सी कंपनी में? सर टेक्सटाइल कंपनी यहाँ पे अलग बोल के, वहाँ पे मैं आया था इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन वहाँ से मैं निकला, इंटरव्यू दे के निकला उसे, और मैंने थोड़ी शराब पी ली, और उसके बाद में शराब पीने के बाद में स्टेशन पे आया। स्टेशन पे आने के बाद में मेरे को थोड़ा मतलब एक फॉर्मेलिटी मेरे को लगी कि मैं जीआरपी ही हूँ, ऐसा मेरे को लगा पर्सनली। तो मैंने टिकट चेक करना चालू किया, लेकिन मैंने कोई कस्टमर को या कोई पैसेंजर को थप्पड़ मारा नहीं। टिकट चेक किया खाली 15 मिनट, टिकट चेक किया और उसको चेक करके उसको दिया, बस। उसके बाद में कुछ मैंने किया नहीं।